Jai Hind. In this chapter 3 for class 8, coal and petroleum, learn objects. In this chapter, the student will learn about types of natural resource, fossil fuel, energy crisis, and the prevention, harmful effect of fossil fuel, and conservation of fossil fuel. This explanation of chapter, all the living beings present on the earth require more material to the serve. The material required such as water and soil are the referred to the resource of the earth. The resource which the exist freely in the nature on the earth are called natural resource. वो जो प्रकृति में जो फ्री जो है, मुक्त रूप से जो है, उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. दिस नेचुरल रिसोर्स आर यूज्ड बाय द ह्यूमन इन द डिफरेंट वे. फॉर एग्जांपल, एयर इज यूज्ड विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और ऑब्टेन द विंड एनर्जी. कॉयल इज द यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इज द यूज ड्रिंकिंग एंड द वेरियस अदर पर्पसेस एंड सनलाइट यूज टू द ड्राइंग क्लॉथ एंड सेल्स, है ना. Types of natural resource on the base of ability. Natural resource are the classified into renewable and non-renewable resource. Renewable resource are those that are never depleted or those that can be replaced in the short period of time. These resources are also inevitables. Inevitables माने होता है कि कभी खत्म ना होगा. Inevitable माने खत्म नहीं होगा, क्षय नहीं होगा. Resource for example, air, sunlight, water, etc. However, some renewable resource है. मे बी एक्सिबल्स इफ द, जो एक ना एक दिन क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इफ दे आर द यूज फास्टर rate as a compared to the renewable resource. For example, the ground water is the inusable resource become the excusable resource when it used too fast. This may be due to the disturbance in the water cycle or the growing pollution. Non-renewable resource are those the resource which once used to the cannot the replace in the short times. They are also is called exudables, and resource are their ability is limited. Availability is limited. For example, fossil fuel like oil and petroleum, natural gas. Once this exudable and is not easy to the produce them is takes a million of year from this fuel. However, some the exudable resource यानी इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है उसको बनाने में, इस रिसोर्स को. ठीक है. Fuel. Next topic, fuel. Fuel is substance or mineral as given out of heat and wearing is called fuel. For example, wood and coal, cooking gas, and kerosene, diesel, and petrol, etc. Fuel. Fossil fuel of a million ago, air, plant, and animal die and the were burned inside the earth, and later they were and converted by soil and mud, mustard and water. In absence of oxygen, the decayed and the underwent a lot of change due to the pressure, heat, and the bacteria. Our air and air were converted in the fossil fuel. This fuel to dug from the earth and used in different from the generate energy. This produce large amount of energy varying. Coal, petroleum, and natural gas are fossil fuel as they derive from the remains of a living organism. In this nature, these nature are the limited and can be exhumed due to the human activities. Coal is a fossil fuel. It is formed by the decompositions or remain of vegetations. It is take a million of year to form of coil. In the formation of coil, a slow chemical process taking place at the converted wood into the coil, which is the called carbonism. Coil is a mixture of carbon, hydrogen, oxygen, and however carbon is present in the large amount while hydrogen and oxygen present in small amount. The coil is extracted from coal mines under the surface of the earth. A lot of heat is produced when a coil is burned, which prove that is good fuel. One advantage of it is that it also produces lot of smoke and ash, thus the causing air pollutions. Depending upon the amount of carbon content, there are 4 types of coal. Pit. It is the dark brown, यानी deep जो brown रहता है उसको हम pit का नाम देते हैं. Substance and contain the less percentage of carbon content than other. It is the used of industrial fuel. Lignite is also called burn carbon. It is the contain about 50% carbon. It is used to generate electricity. Bituminous is the coal is also called black lignite and the contain about 70% carbon. It is used generated power and make coke and coal tar. Anthracite it is the hardest coal that contain more than 90% of carbon. It is also waste variety of the coal available. When is burned, it is produce more heat and less dust and soot. It is also used as fuel in the engines
एंड ए फर्नस, चूल्हे में और इंजन को चलाने में किया जाता है। इन वास्ट डिपोजिट कॉयल फाउंड इन इंडिया वेरी मेनली इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। कॉयल फील्ड विद द hug amount of a deposit are found at Bokaro, Jhiria in Jharkhand and Raniganj in Bengal. Types of peats and lignite, bituminous, anthracite. Destructive and distillation of coal heating of substance and strongly in the absence of air is called of destructive distillation. When is coal heated strongly in the absence of air, temperature 1000 degrees Celsius difference used a product of octane. In this process activities, now नेक्स्ट टर्म्स लेट अस डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। कोयले से क्या क्या प्रोडक्ट बनता है? तो कॉक, द सॉलिड रेडियस लेफ्ट द बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिल्यूशन ऑफ coil is known as coke. It is the pure form of carbon used the manufacturing of steel. Coke is a grey colored and substance. It is very hard and porous. It is the considered to be the good fuel as that does not giving out of smoke when burn, जो जलने पर धुआं बहुत नहीं देता। Coal gas, it is the mixed the methane, hydrogen, carbon monoxide and other gases. Long ago it is was used for domestic cooking and lightings, but it is no longer is in use as it weed replaced by electricity. Coal tar, it is the obtained. Coal tar का यूज़ आपको सिर्फ समझना है कि रोड मेकिंग में किया जाता है। कलकत्ता का यूज़ ammonical liquor during the destructive and distillation of coal, ammonium compound are produce this compound when the dissolved in water from ammonical liquors. It is the used for the manufacturing nitrogens just fertilizers. Petroleum word means petra यानी रॉस, ओलियम is oil. देखेंगे in this figures pictures देखिए वाटर के जो पानी के नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ देखिए एक चट्टान है, एक चट्टान यहाँ, ये दो रश्क है, चट्टाने हैं ज़मीन के अंदर के। इस चट्टान के बीच में देखते हैं ऑयल दिख रहा है, और ऑयल ये लेवल जो है ऑयल का लेवल है और ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर लेवल है और ये दोनों चट्टानें हैं। इस चट्टान के बीच में जो ऑयल दिख रहा है वो पेट्रोलियम हो गया, और ऑयल के बाद का जो लेवल है, अबव लेवल है, वो गैस हो गया, ठीक है, इन दिस पिक्चर क्लियरली। पेट्रोलियम ऑल्सो कॉल्ड द क्रूड ऑयल इन दिस इंपॉर्टेंस फॉसल फ्यूल, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स। Petroleum is formed between non-porous rocks. It is obtained by the drillings through the earth crust and imperious or non-porous rocks. It is the black liquid due to its importance in the modern world. It is also known as black gold. Petroleum refining. तो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग देखेंगे, अगर 20 से 150 डिग्री टेम्परेचर पे पेट्रोलियम को प्रेशर करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो वो पेट्रोल में बदल जाएगा, 200 डिग्री पे केरोसिन तेल में बदल जाता है, और 300 डिग्री पर ये कन्वर्ट हो जाता है डीजल में, 370 में ये फ्यूल ऑयल बन जाता है, 500 डिग्री में क्रूड ऑयल बन जाता है, जो जहाज में और शिप्स में यार्ड में यूज़ किया जाता है। यार्ड में शिप्स में जो तेल होता है वो एकदम अव्वल क्वालिटी का तेल होता है, ठीक है, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, जिसका टेम्परेचर जो जमता नहीं वो तेल, ठीक है, जैसे एयर के विंग में तेल भरा जाता है एरोप्लेन्स के, तो वो क्रूड ऑयल होता है। अभी द प्रोसेस इज द थिक एंड वैक्सी लिक्विड ड्यू टू द विच कैन नॉट बी यूज रे फॉर्म। ये जो तेल कच्चा तेल रहता है, इन दिस कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम ऑफ क्रूड ऑयल आर द सेपरेटेड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। The process of separated crude oil in a different component at a different temperature is called a refining of petroleum. Refining of petroleum is the carried out of the petroleum refining. This crude oil is the heated to 400 degrees Celsius or above in a furnace is the where vapors of the hydrocarbons are allowed to passing through a fractionating tower. The hydrocarbon vapor with a highly boiling point and condenses fast at the base of tower. Lighters vapor rise up and condense at different level according to their boiling point. Boiling point rays escaped out of through they went at the top. The fraction of petroleum अब they are used to the sowing in the flowing. इसको आपको याद कर लेना है, ये देखो, इसको पूरा को रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अभी हमने बताया था कि ये है नेचुरल गैस, जो पेट्रोल के ऊपर का जो लेवल है, ऑयल के ऊपर का जो लेवल है, ये देखिए यहाँ पर लाइन गई हुई है, ये वाला जो लेवल है ब्लैक वाला, यही है गैस। नेचुरल गैस इज ऑब्टेन अबव द लेयर ऑफ पेट्रोलियम. इट इज ऑल्सो फ्यूल, फॉसल फ्यूल. द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन besides butane and a propane are also present in the very small amount. It is the transportation and distributed to the other places through pipeline. It is the storage under highly pressure as a compressed natural gas यानी CNG. यहाँ देखिए गाड़ी में जो CNG व्हीकल्स होते हैं, इसमें एक टैंक रहता है, उसी में गैस भरती है, ये चलती है, ये इसको इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं करता नेचर। इसका कुछ some importance used to natural gas are giving below. It is used at home for cooking purposes. It is the used automobile vehicle as a fuel. It is does not produce smoke like diesel and petroleum. It is a clean fuel. It is used the manufacturing of steel, gas and number of other chemicals. Energy crisis due to the advancement in technology. In technology, more and more energy is required of offices and shop homes industry. In the demand for energy and the consumption in the some area as a flow. Wide used to the computer
sector in all a sector has a increases the demanded for electrical energy. Energy is the needed of various electrical application at a home and if office. As the number of vehicles increase on road, the need for fuel as a increase. In this problem rise because the supply of electrical energy is less as compared to its production. This therefore lead of energy crisis. Preventing energy crisis will always be highly demand, but the wastage of energy can be reduced by the following energy efficiency method. We can prevent energy crisis by taking proper step, and some of these step by giving below. Do not waste energy. Just judicious of the energy can be the prevent as us from the energy crisis. Switch off the bulb and fan and other electrical applies when they are not used. जरूरत हो तभी इसको इस्तेमाल करना है. यूज द अप्लाइज विद द लेस एनर्जी एंड कंजप्शन सच लेडी एंड सेपल लाइट्स. यूज एफ इफिशिएंसी स्मोकलेस स्टोव एंड द प्रेशर कुकर विल द कुकिंग. यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और द पूल कार्स एंड much as the possible instead of they prevent vehicles. Harmful effect of fossil fuel coal and diesel, carbon monoxide and supply. इससे एसिड रेन हो जाता है. ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ रहा है. ग्रीन हाउस इफेक्ट से इसका कंजर्वेशन आपको करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं. अब इसके लिए इंडिया का एक PCR यानी कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑफ एसोसिएशन ने इस पर कुछ टर्म्स अपने बताए. ये टर्म्स है आपको नोट कर लेना है. अब ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक वे से विसिनिटीज़ आपको दिखाई गई है. ये पेट्रोल पम्प है, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये ऑटोमोबाइल्स है, ये सब है. डेट इज अ डैश सिंपल. सो लेट विल बी शेयर वीडियोज़.